हेलो हेलो व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ। बहुत कुछ चल रहा है, पर बहुत कुछ नहीं भी चल रहा है। व्हाट अ सैड स्टार्ट शिट। उस सब में से क्या क्या आप बोल सकते हैं अभी? बोल तो सब सकती हूँ, मैंने कौन सा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। Yeah. So, but since the album has come out, उसके बाद से it's been a little low on the music side because I had a lot of songs earlier, but now I have to, start from scratch again. कि ठीक है, I have a blank canvas now, so I need to like do something from beginning. Or yeah, I was not planning on, but ठीक है, it just built up to be an album. But now I do not have anything on my hand, so I have a lot to do, and I still do not have a lot of things on my plate currently in the music scene. Otherwise, I have a lot of things on my plate. I don't even want to dive into it. Guys, she is doing MBA, so I guess you would understand. ठीक है. So let's talk about music. Like how what is music for you? ये तो भाई क्या ही सवाल पूछते हैं, इसमें तो मैं किताब लिख दूं फिर बैठ के. शुरुआत करते हो. I think music is more like a religion. हम्म. मतलब सब एवरीबडी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर इट. सबका अलग ही मतलब वो है. कोई राधा मीरा बन के लाइक फुल चिल कर रहा है कि हाँ ठीक हम्म. है. समबडी लाइक एक्चुअली सब पूछते हैं कि हाँ म्यूजिक तो मतलब गॉड है हम्म. और एकदम पावम रखना है एंड ऑल ऑफ हम्म. दैट. But I think it's a religion. But to me, to me also it's a religion only. I've followed it since childhood. Nobody forced me into it, हम्म. but it has been there for me when nothing was. It gave me hope when nobody or nothing else gave me hope. हम्म. I would have not survived only 11th, 12th had I not have like music or हम्म. anything. And yeah, I mean, I feel like music is the only part of me which makes me me. हम्म. Without it, I don't know what I am. मेरा आइडेंटिटी क्या होगी? I would have been like, I don't know, मैं फुल मरवर चुकी होती कि भाई शिट मैं क्या कर रही हूँ जीवन हम्म. में. Had it not been music. So yeah, in a nutshell, that would be it. I mean, I don't know what to say, but I guess this is the best answer for this question I have got yet. Let's see. आगे You देखते हैं, are आगे देखते हैं. privileged. So ठीक है. और क्या क्या सवाल पूछता हूँ मैं, ये थोड़ा हटते हैं अपने स्टीरियोटाइप, उससे हटते हैं. तो Okay. ठीक है, वापस स्टीरियोटाइप पे आता है. मुझे दिमाग में आ नहीं रहा कुछ. क्या बोलूँ मैं स्टीरियोटाइप से हट के. ठीक है, तो वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? लाइक म्यूजिक की एंट्री तुम्हारी जिंदगी में हुई कैसे? Okay, well, music entry. I think this is a fact that is out there that even when we speak, it's music. हम्म. Anything that you hear, even when somebody is crying, it's essentially music. It's हम्म. sound basically. So start तो भाई तो वहीं से हो गया भाई. But legit start if you wanna speak about it would be when I was 4 years old. हम्म. एंड ये तो स्टोरी मुझे रट चुकी है. इतने लोग मुझे पूछ चुके हैं ना, अब सो आई एम गोना पुट इट आउट देयर. तो चैनल पे तो पब्लिश ही हो जाएगा अब ये कि हाँ ठीक है, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. हम्म. सो माय ब्रदर यूज्ड टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक from a हम्म. private teacher who used to come at our place and teach him. And I was 4 years old only, so I used to just sit behind the door and listen and just, sing something and all, whatever he's learning. And हम्म. then one day they both found out, okay, that this girl is also trying to sing and probably is interested. So then mom put me into the same class. So I used to learn on his scale, as an on guy scale, which is a little higher than what girls sing हम्म. on. हम्म. And I used to learn what he was learning while I was 4 years old. I gave exam together with him, but since I was four, so I couldn't give the written examination, but I did give the oral part and everything. So that was fun. But हाँ फिर उसके बाद काफ़ी on and off रहा. मतलब I learned Indian classical, but then I stopped and then I started again and then I stopped and started again. So बहुत होता रहा during the whole school tenure. हम्म. But that's how it started.
I mean, the moment you started answering this question, I knew it is prepared. That is what a prepared answer sounds like. So, first of all, Hmm. सो ठीक है, ये वाले पार्ट पे मैं सोचा था बाद में रहते हैं, बट आते हैं इसी पे कि एल्बम के बारे में बात करते हैं. द नेम ऑफ द एल्बम इज हाउ टू जस्ट टू. व्हाई वाज इट नेम्ड दैट एंड व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? क्या जर्नी थी मेनली सारे सॉन्ग्स की? Wow, wow. Well, this is very close to my heart, extremely close to my heart. So I remember during my this college last trimester semester, अब का trimester हो गया but ठीक है. So that time I was just in double minds. What should I go ahead and do? In music scene or any professional degree that I want to pursue. Like where should I go? What should I do? How to go about it? हम्म. And I had so many questions and I had answer to none of them. हम्म. So I used to go to a lot of people who I admired and I used to ask them the same question and they gave me different answers, but it never satisfied me. As in what to do and how to go about it. मतलब वो सब ऐसा बहुत ही ना कि अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तुम्हें मिल ही जाता है. मैंने कहा हाँ ये सब बुक वाली बात है, अभी प्रैक्टिकली बताओ क्या करूँ मैं. मतलब हम्म. प्रैक्टिकलिटी पे आके तुम्हें बताओ कहीं कि व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप. दिस इज ऑल सुपरफिशियल. ऐसा वो कोटेशन होता है ना पीछे गांधी की फोटो लगा के और ऊपर ऐसा हम्म. लिखा होता है महात्मा गांधी करके. वो सब बातें नहीं है. अभी सही में बताओ क्या करना चाहिए. So I हम्म. got different answers, but I was never satisfied with those answers because I think I'm too close to this question and too close to this matter that it always hurt me, or I started crying whenever I used to think about this thing. But then one हम्म. day I sat with my cousin sister. I was over at her place and ऐसा एकदम dim light करके एकदम रात वाली बात होती है सोने से पहले एकदम लंबी gossip वाली discussion. It हम्म. was that time, and I asked her this question. You tell me, how did you break through this part of your life? And because I think everybody goes through this phase of their life where they're just struggling and probably finding out what they want to do, and if they do हम्म. not have to, well, great, तुम्हारी life बहुत sexy चल रही है. मेरी तो नहीं थी ऐसी. So then it started with कि I asked a lot of questions, and then in the end I asked her how to, like, this is my question, how to. And after like I guess 2.5 hours of discussion, it just came down to just do. If you really want to do something, you would just do it. You have to just go for it. You do not हम्म. look for pros and cons. You do not find and make a path कि ठीक है अभी next step क्या है क्या करना है. You just go about it and then you just dive in basically. So हम्म. it's in the end I was like, okay, the discussion started with how to and then it ended with just do. So it just stuck with me and it gave me a lot of hope on how to go about it, and just actually just motivated me to ठीक है अब कुछ करना है तो अब कर ही देते हैं. अभी इतना सोचने का टाइम नहीं है और ना ही सोचने में इतना टाइम बर्बाद करना है. I'll just go about it. So how it is related to the album? Well, it is because I was always just self-doubting me if I should actually post my songs out or not. पता नहीं लोगों को हम्म. पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, is this even a song, should it be called a song, मतलब ये तो मैं ऐसे कुछ भी कर दी, कैसे गाना बन गया ये, I don't know how to go about it. And then I thought how to, well, just do. So then that's how it happened. So it was my breakthrough जिसके दौरान मैंने सारे गाने लिखे. So I want to name it how to just do so that I always am reminded of that time what I went through all of this shit. So yeah. एंड यू डोंट मतलब कुछ प्लान मत करो बस. इफ यू हैव टू डू समथिंग यू डू दैट. I mean, don't self-doubt yourself. If you want to do something, just go after it. Just do it. उसके बाद बीच का मत सोचो कैसे क्या, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट होना चालू हो जाएगा. तो अभी सॉन्ग्स यू मेंशन्ड सम सॉन्ग्स, एल्बम वाले सॉन्ग्स पे नहीं आएंगे. अभी उन सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं. छिपकली के बारे में बात करते हैं. Oh God. बाय द वे गाइस, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता है, एक और चैनल है रशिम का. No. No, 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 you're not doing this. जिस पे ये सॉन्ग था, बट अभी ये सॉन्ग ऑफिशियली भी रिलीज हो चुके हैं. Yes, yes, yes. हाँ, तो आते छिपकली पे आते हैं. व्हाट वाज छिपकली? एंड एक और था ना, मेरे को सॉन्ग का नाम नहीं याद आ रहा. Good.
Good. मैं ढूँढ देता हूँ। Chipkali, okay. So this was during first wave, I think. एंड सब ऐसे घर में हुँ, क्वारंटीन कर रहे हैं डर के मारे। अभी तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, थर्ड वेव हो, फोर्थ हो, हम बाहर जा रहे हैं, हम कबाब खा रहे हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। सो फर्स्ट वेव के टाइम यस एवरीबडी वाज़ एट देयर होम एंड आई वाज़ सुपर लोनली एंड आई थॉट और तब रील्स नए-नए आए थे, तब टिकटॉक नया-नया बंद हुआ था। तब मतलब वो उस ज़माने हुँ। की बात है, समझ रहे हो? इट एक्चुअली सीम्स लाइक अ ज़माना 2 साल हो गया तो एक्चुअली हाँ, मेक सेंस। है वो ज़माना भई, पता भी नहीं चला वो हाँ, 2 साल। वो लाइक ज़माना ही फर्स्ट था। क्वारंटाइन अभी तो था। ठीक है, तो तब आई थॉट कि मैं तो भाई सुपर बोर हो चुकी हूँ एंड बैचलर्स वाज़ एकदम फुल ईज़ी। इट वाज़ नो टास्क एट हैंड, नथिंग मच टू डू, इट वाज़ वेरी ईज़ी। आई एक्चुअली एन्जॉयड माय बैचलर्स अ हुँ। लॉट, सो ठीक है, इट माइट हैव सीम्ड लाइक मुझे ज़्यादा काम नहीं था। दैट ऑल्सो द सोसाइटी प्रेसिडेंट। that was fun. That was super fun. I don't regret one bit of it. Anyway, coming back हुँ, to Chipkali, so I thought of doing this thing कि ठीक है अगर मुझे कुछ रील डालना ही है I'll not post any TikTok or something because that's not what I do. So I'll go about this हुँ, thing that I'll ask people to give me prompts or any word that they want me to write a song about. तब reel 15 seconds की होती थी तो I'll make 15 second songs on it. So उसमें से one of the हुँ, prompts were Chipkali. हुँ, And I was super scared to make a song on it. I was like, इस पे कौन गाना लिखता है? मतलब who writes हुँ। songs on Chipkali? मतलब ठीक है भाई. And then I thought, how कर come लेंगे I'll just ट्राई। do? ये पूरे टाइम प्लगइन मिलने वाला है लोगों को आपको क्योंकि मेरे को नहीं ज़रूरत पड़ेगी ये बोलने की, ये खुद प्लगइन करती रहेगी एंड द लिंक टू इट वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। नहीं तो यू कैन सर्च ऑन स्पॉटिफाई हाउ टू जस्ट डू और कुछ नहीं है उस नाम से। तो इसकी Yeah, एल्बम आएगी। I don't think so और कुछ मिलेगा इस नाम से. But it's how to question mark just do full वही। stop because हुँ, anyway. क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है एनीवे कमिंग बैक टू छिपकली सो छिपकली हाँ तो देन आई थॉट कि ठीक है अब लिखते हैं यार क्या है सो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय लोनलीनेस दैट वी फील अराउंड and what Chipkali might be feeling. I mean, the song itself says कि bathroom में छिपकली थी, even though people are disgusted by it, even I am, not kidding. But then when it's not there, you feel like कि भाई तू भी चली गई. Like this is the ultimate of quarantining. कि I had one छिपकली in my room which was keeping me company, and even हुँ, she's not there to keep me company. But this is how a lot of हुँ। people felt during quarantining and maybe other times of their life. But this is what it was basically inspired by. And how did it convert to the form which has released now? Hmm. बिकॉज़ छिपकली को बने हुए बहुत टाइम हो गया था, वो बहुत टाइम के बाद हुई है रिलीज़, जहाँ तक मेरे को याद है। Yeah. But it was recorded बहुत पहले ही. Udbhav released it recently. हाँ, So what happened हुँ, was जब उद्भव और मैं पहली बारी मिले थे, so he just wanted to हुँ, hear me out and whatever songs I had, what kind of songs I make, what kind of an artist I am. Probably he was trying to figure it out. I'm just guessing what he was thinking. हुँ, हुँ, Well, I sang a lot of songs for him, but then in the end, I thought, you know what, I have something very quirky for you. I don't know if you like it or not. I was very scared on singing this thing. I didn't know how crazy Udbhav हुँ, makes, crazy songs Udbhav makes, but ठीक है, I wanted to go for it. I was like, ठीक है, क्या ही फर्क हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. And I started हुँ, singing this, and his mind was blown. He was like, I want to record this. And he recorded हुँ, it. ऐसा भी नहीं था कि भाई गिटार्स अलग से रिकॉर्ड हुआ है, वोकल्स अलग से. He just, हुँ, माइक सामने रखा. हुँ, He's like, गा. I was like, okay. So I sang. This was in the first meeting. And हुँ, उसके बाद he requested me कि भाई ये गाना मुझे like I want to keep it for myself. And I was like, हाँ, go ahead, do whatever you want to do for it. And then this is what हुँ, happened with it. एंड छिपकलीज़ जर्नी मैन। एक अलग ही कैरेक्टर आर्क है उसकी। रिडेम्पशन मिला है उसको अभी। Actually, Udbhav gave it a lot deeper meaning. मतलब मेरा तो was just around हाँ, this thing, but what he wanted to portray in his song by putting this part in was that कि what has humanity done to the earth and etc. Wherein Chipkali meaning dinosaurs etc. which we destroyed, and how we humans are हुँ, destroying the world and nature.
So this is what he wanted to Hmm. portray, that now we miss them, though they're gone. But this is what life is gonna be later on as well. Like we are destroying nature and we are going to miss a lot of it. Deep. Very. So now let's come to the album songs. सबसे पहले किस सॉन्ग के बारे में बात करनी है? You choose. You choose. Yeah. You choose. Go ahead. Oh, me. Well, let's start with my favorite song. All right. Well, I take it Yeah, must be Rang or Paradise. yeah. Rang Hmm. Rang. Got it. Next, we can do Paradise. All right. So Rang. Well, uska original version is not out yet, by the way. It says Rang live. It's not the original studio version, just by the way. I Yeah, know. people need to wait for it because I recorded it a lot of times. एक दो तीन तीन बार I think we've recorded it, but we still did not release it the way it should be released. Because we were just not satisfied. We thought there's more to this song, and this song can be bigger. A lot of things can be done to this song, and I trusted Udbhav completely with it. I thought जो करना है कर इसके साथ. We had a couple of Hmm. ideas for it as well, but we did not execute it. We thought we'll give it some time, and I am sure it's gonna be an evergreen one, wherein even if we release it a little bit late, it won't go out of just the current time and all. Hmm. And it was Hmm. basically Udbhav's idea कि we should wait it out, and then I thought कि ठीक है अगर नहीं release करे then we should either release a live version of it, since we did a show together in Piano Man. तो उधर का live recording we Hmm. had and then we released that one. So उसका story तो ये है, I think uh, I did not have any experience sort of particularly which led me to make this song, but I did I feel like this song had to be made and then it just came through me. मतलब ऐसा बनना था, Hmm. ये वर्ल्ड में आना ही था, but then particularly I was the chosen one through which the song came out. I would just like to say that. Hmm. And it just started with I was just playing with the chords and all around the guitar, and I was like हाँ ठीक है कुछ तो आ रहा है दिमाग में. And I think it must be inspired by the song वो भाग मिल्खा भाग का ना, अपने ही रंग में मुझे को रंग दे. मुझे ठीक है ये करेंगे. वाला सॉन्ग बिकॉज आई एम अ बिग सूफी फैन. कर सकते तो कंटिन्यू थोड़ा सा. बाय द वे इसका भी कवर इज देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल इफ यू वांट टू. ठीक है करो करो प्लग करो. So And by the way, your YouTube channel also touched like crossed 1K yep, subscriber. Congrats for thank that you. too. But अभी ये थोड़ा सा गा दो. ये इतना प्लग इन नहीं चलेगा. लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, but All still right. let's give some vibe. ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बनके. There you go. अभी अभी ना डूबे आप. इसके चैनल की लिंक, चैनल भी नहीं, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो ये पॉडकास्ट सुने पूरा, उसके बाद आप जाएं डूबे. Go ahead, do that. एंजॉय. Back हाँ. on the song. So I'm a big Sufi fan. I listen to Sufi music all the time. So हम्म. I obviously हम्म. have this innate thing कि हाँ मैं कुछ भी लिखूँ तो it must be very Sufi. मतलब वो automatically आ जाता है, because any kind of genre that you are attracted towards, then you end up making that sort of songs. Though I've हम्म. started making a lot of हम्म. pop songs recently, but initially I was full Sufi. Even Pasa was very Sufi. सूफी क्लासिकल. Was very Sufi earlier, but then we sped it up, and हम्म. then this is how it sounds now. But iska original audio हम्म. was not supposed to be this way. It was very slow, very soft and very nice. Even though it's very pop and nice this way also, I love the current version. But this is not how I wrote it earlier. How we changed it. Coming back हम्म. to Rang.
So Rang, but then I don't know what got into me, but मैं था full deep thinking करने लग गई कि ठीक है, and even the past experiences that I've had, it was always about, it was not written for somebody for a change, but I know the songs who have been written for someone. someone, for multiple people have written multiple songs by the way, ऐसा एक बंदे को credit नहीं वाह! देते, ठीक है? हाँ, ठीक है, डन, डन। Yeah. So, so I just, had this thing ki what in life I'm looking for is the one. What everybody is looking for is the one, and I'm like full hopeless romantic. So yes, I was like, ठीक है, and even if I find that somebody, and I'm like, कि तुम जैसा कोई और नहीं मिलेगा, so like I want you to stay, and then I go back and look for the things कि ठीक है, even if you want to go, I don't want you to go, etc. This is how I've felt whenever I've been with somebody, and I feel like this is the one, though it always doesn't end up that way, but this is how a hopeless romantic feels. And a lot, and जब मैंने ये सुनाया था अपनी बुआ को, by the way, who has had love marriage, so she was full in tears because she's like, oh my god, I relate to it so much. But yeah, I mean, whoever is in love and feels like they've had like a little bit of a fight or something, or maybe they've got into long distance relationship, they would definitely relate with this song. And I was also told कि ये song तो करण जौहर की मूवी में होना चाहिए. So I was like, ओफो, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है. I mean, if that happens, एंड please. दैट इज़ व्हाई सॉन्ग हैज़ दिस इंट्रो ओनली कि Exactly. मेरे दोस्तों ने बोला कि करण जौहर की सॉन्ग में होना वो फ़िल्म में होना I चाहिए, am किसी का not losing कॉन्टैक्ट हो तो any भेज देना। chance कि जहाँ कोई उसका कांटेक्ट हो और ये गाना मैं सुना रही हूँ तो ये चांस मिस हो जाए. आई मीन, यहाँ पे भी अगर कोई करण जौहर का आस पड़ोसी सुन रहा है, प्लीज टेक दिस सॉन्ग, गिव इट टू हिम, इट माइट जस्ट हैपन. So yeah, I'm not leaving आई any मीन chances. रशिम आनंद अंडरस्कोर वगैरह मेरे को याद नहीं है, वो बोल दे इंस्टा आईडी। Underscore Rashim यू Anand कैन डीएम underscore. हर देयर। हाँ, Yeah, ओके। before and after. Yup. So this is the story behind Rang, I think. And I have additional like added paragraph or verse for Rang, but वो live version में नहीं है, by the way. So there might be a lot of not a lot of, but a few of lyrics changes in the official audio when it is released, when you'll get to hear it, and an added part in it, and a lot of instruments, of course, not just guitar. Obviously, because it is not a live performance, it will be हाँ, fully full lot of completed। harmonies, lot of बहुत 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 कुछ होने वाला है. I'm gonna make this song like grand. I'm looking forward to it, honestly. So, should we expect next song which you are releasing it is Rang, or some other song is going to वो get released सॉन्ग की first? किस्मत पे डिपेंड करता है. इतनी बार ये हुआ है कि आई वांट टू रिलीज सम अदर सॉन्ग पहले, बट देन इट जस्ट डजंट हैपन. सो ये गाना रिलीज हो गया, I वो फिर I ये I एंड know ऑल ऑफ that. दैट, मतलब वो जंबल अप होता रहता है, तो आई कांट प्रॉमिस, बट आई एम श्योर इट विल कम आउट Hmm. सून इनफ. So, let's move on to Paradise, the song in which you rapped. Oh well, it was hard. I'm so scared of rapping. मैंने बचपन से कभी रैप किया नहीं है. And I've been trained in classical, I've been trained in western. तो उसके बाद एकदम से रैप हिप हॉप में घुसना was a little strange for me because I'm consciously doing it. बचपन में nobody's, I mean, I don't know about anybody else, but I never consciously was like कि ठीक है classical गाते हैं, ठीक है western गाते हैं. I was just trained in a way, and I Hmm. am not trained to Hmm. rap. आई मीन, किसी ने मुझे जाके बोला नहीं ऐसे करके Hmm. रैप करते, सो आई एम लाइक, हाँ ठीक है, आई एम गोना फॉलो दिस अप विद यू. So I just had to Hmm. do it, and I was like, okay, how do I go about it? And that too, recording it with Udbhav, who is like the hip hop pop का master, and I'm like, ठीक है, मतलब क्या कैसे, I don't know, I'm just gonna go about it. Coming to the backstory of Paradise, well, that was my first, I mean, I can say introduction to pop, hip hop, that I myself wanted to do. Nobody forced me to do it. And Hmm. again, I was there at that point of time in my life where I was still contemplating if music is a thing for me or not, and if I should go ahead Hmm. pursue it or not. And तब मेरा कोई गाना रिलीज Hmm. नहीं हुआ था. I had
I did not meet Udbhav. I had no producer, no original indie artist वगैरह कोई नहीं था मेरे contact में, and it was just me and my Discord audience. Let's just go with that. And yeah, so I started. uh, you know who you are, Yeah, and you know we exactly who remember you are. you. Why? Much love to you all. Really, really. But coming Hmm. back to Paradise. So, hi, I wanted to write a song for myself from my very positive side to my very negative side, because there are times in my life when I'm like super positive, hyped up about, I'll crush the music scene, I'll make it really big, and I know I have full confidence in myself, I'll convince anybody who comes at me. And then there are this negative Hmm. point where I'm convincing myself कि तेरे से नहीं हो पाएगा, इसका कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, you're not even that trained, you don't even sing that well, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब सोच सोच के, and I just start crying and overthinking, etc. So I want to write a song Hmm. from my positive side to my negative side, that you will make through, and you know what you've been through, and it's okay, like it's a journey, it's a part of your life, and that only makes you stronger. So then I Hmm. started writing Paradise, and initially it sounded very sad to me. Matlab, the sound of it's very sad. It was very sad, but it was only guitar and me, and मैं भी बहुत दुखी हो गई थी about the whole topic कि ठीक है, lyrics are a bit harsh honestly, कि भाई ऐसा कलाकार ऐसा होता है and all of that, तुमने ताने सुनी है दुनिया का, and आंसू पी लिए तुमने, what you've been through, so it's obviously gonna sound a little bit sad, but the music And definitely is not. when you wrote it, was it written as a pop or a Sufi wala No, one? no, no, no. I wanted to rap, and there was a rap in between, but I did not have enough imagination to put all of the production Hmm. together, because I had never been to a Hmm. producer before that. And I was just writing songs on guitar, and I was like, ठीक है, let's just, अगर आया कुछ मन Hmm. में तो I want to record it and put it out. I'll probably rebuild it and, build over it probably someday. So it was Hmm. just me and guitar, and kind of sounded very slow, not Sufi, but kind of blues. Let's go with that. Hmm. And Hmm. then it turned into a pop song, and I'm really glad it did. Hmm. I mean, मतलब वो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि रशिम रैप करे ही ऐसे उसमें. Nobody expected. Even I didn't expect it. It took me. I was like, ठीक है, ऐसा टेंशन बाहर निकाल के I'm not gonna. अब मैं रैप करूंगी बिना कुछ सोचे, without judging myself too much about it. Hmm. एंड एक वो भी है ना, लाइक जितना मेरे को पता है कि यू एंड मी, वी बोथ आर लाइक कि हमको ऐसे स्टेप टू स्टेप गाइड चाहिए जब कुछ सीखना हो, कि ये करना है पहले. अच्छा, आई आई मतलब मैं बोलता हूँ कि ऐसे उद्भव के पास तू गई होगी, मेरे को बता, बेसिक्स बताओ पहले. उसके बाद मैं करती हूँ रैप के. Yeah. I was like कि Udbhav, how do I rap? तो he's like, अच्छा बोलना होता है, बस ऐसा ऐसा कन्वर्सेशन से करना होता है. I'm like, okay. While I'm a big Doja Cat fan, but at the same हम्म. time, I'm kind of afraid to rap. But now I'm not. Now I'm like, हाँ भाई आएगा तो कर ही लेंगे. ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकती मैं. ऐसा full vibe लेके आई हूँ मैं ऐसा अपने साथ में. So, guys, you know which Rasham is here today. हाँ, you know which Russian is here today. तो अभी हो जाए फिर थोड़ा सा रैप Oh कुछ. God. मे बी पैराडाइज वाला पार्टी इफ नथिंग एल्स, और डोजा कैट. और don't even get me started on Doja. Doja Cat भगवान है मेरे लिए, literally. ठीक है. सो विच वन यू आर गोइंग टू डू अभी? I'll try and do Paradise. I don't know if I remember the lyrics very correctly because it's been so long. But ठीक है, let's try. उठ अब तू डर मत सुन दिल की और बोल बंद कर दे उनकी जो करते ना और कुछ बस कंदब है वक्त तो कर लेना मेहनत जब तक ना बन जाए हर इंसान का लाखी तेरी भक्त. पैराडाइज की भी लिंक है. अब मैं क्या सारे सॉन्ग्स के सारे अलग अलग लिंक डाल आते देता रहेंगे हूँ. बीच बीच में. सब 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 ऐड होता जा रहा है. ठीक है, हम्म. नेक्स्ट सॉन्ग यू चूज. महाजमीन तो पहले रिलीज हो चुका है वैसे, बट स्टिल इट्स देयर ऑन द एल्बम.
So let's go with महाजबी के बीटीएस में तो मैं भी हूँ। हाँ, actually. No, no, that was for वो the other song. महाजबी में अरे भी था हाँ, मैं। oh yeah, yeah, you were there, you were there, you were there. Mahjabeen was also लास्ट वाला one पार्ट of किया the था हमने एडिट। first few songs that I wrote. Puri album is one of the हम्म। first few songs that I wrote, honestly. But स्पेसिफिकली महाजबीन वुड बी वन ऑफ देम एंड मतलब ये गाना तो मेरे दिमाग में मुझे प्लान था, ये गाना ऐसे है, इसमें ये म्यूजिक है, इसमें ऐसा 8-10 हार्मोनीज ऐसे आनी चाहिए, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ म्यूजिक आना चाहिए, ऐसे गिटार आना चाहिए। इट वाज सो प्लान्ड, इट वाज सो प्लान्ड। आई रिमेंबर मैं ऐसा ऑटो में जा रही थी फॉर माय म्यूजिक क्लासेस एंड आई वाज स्टिल रिकॉर्डिंग कि ये वाले पार्ट के ऊपर ये वाली हार्मनी ऐसे ऐसे करके आई हैव बहुत मेस्ड अप वॉइस नोट्स का थिंग इन माय फोन। It's so crazy. It has so many recordings और आधी तो named भी नहीं है. So you will get lost only once you start listening. You're like अच्छा ये क्या थी, अच्छा ये क्या थी, okay okay okay. मतलब full ऐसा on the spot recording जब जो thought आया and all. It was very planned. But about thinking about how I wrote it, well, nobody knows. But it was actually inspired by a song called Manjha, if you know. तो बहुत बहुत प्यारा गाना है वो। आई थिंक इट्स बाय विशाल ओनली। नहीं, लेट मी थिंक। आई डोंट नो। वेट, आई जस्ट गूगल सर्च इट, यू नो व्हाट? आई डोंट वांट टू गेट माय फैक्ट्स रॉन्ग। हाँ, इट्स बाय विशाल मिश्रा। सी, I'm right. It's a beautiful, beautiful song. And तब मैंने ऐसा नया नया सुना था, though it's not that old a song, but मैं नया नया सुना था and I was really like loop पे सुनती रहती थी and I was like यार क्या प्यारा गाना है ये। And I think if you listen to that song and if you listen to Mahjabeen after that, you will know how well it is inspired by it. But हाँ, उसके बाद I just had to write a song about something and also I'm very मतलब I had this thing कि मुझे उर्दू words तो include करने हैं। Then I That I know. so I had to include Mahjabeen and Mashuk and all of that I want to include. And I thought I also ideated the video for it कि ऐसा कुछ Hindu Muslim marriage or something like that. I'll make that happen or probably a love story. But then I thought भाई केस वेस नहीं चाहिए मुझको. So I was like बहुत सोच के करना पड़ेगा मुझे ये, बहुत ज़्यादा सोच के I'll have to think of the video thing and then COVID also was happening. So I don't know कि record हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा and all of that. But I'll make sure I'll put out this video. तभी उसका जो Video. even the album art for Mahjabeen, initial the first album art was this thing only कि ऐसा एकदम वो कोठे उत्ते आजा माही, मतलब ऐसा वो छत छत वाला प्यार हो रहा है, there's a girl, there's a guy and all of that. So that is what I wanted to portray in the song as well, like a very playful and all of that. And yeah, I think that's the story behind it. Let's come to Khushi then. खुशी तो यार बहुत self explanatory है, isn't it? I mean खुशी was the first Yeah, song. it is, but that's why I didn't correct you. I know, I knew you would, yeah, realize it. So Khushi is the genesis of my music story, I think. क्योंकि I was like हाँ मुझे गाने रिलीज करने हैं and I want to become an artist and all of that, but कौन सुनेगा मेरे गाने और क्यों सुनेगा कोई मेरे गाने और कोई पता नहीं, it's just that fear once you have not done one thing and you do not know how people will react to it, so you just scared कि क्या होने वाला है, I don't know क्या होगा. So then I thought, you know what, there's this is my best friend and I'll sing a song for her and कोई सुने ना सुने वो तो सुनेगी at least. I mean, there would be one person who will be definitely appreciating the song. So I knew what I had to write and I knew मुझे बस पता था. I have known her for years, so I know what I had to write. It was an easy one. So I sat down and I started writing in it, and then it came out as a poetry itself. So I was like, "Chalo, aur bhi badhiya." It's like full rhyming and all of that. That's a song that's like I think on paper it would be perfect only. Rhyming bhi hai, there's a chorus, there's a bridge, verse bhi hai, so sab kuch hai, intro hai, outro hai, harmonies hai. There's like everything I've covered in that song. It's like picture perfect.
क्यूट वीडियो भी है, उसके लिरिक्स भी आ रखे हैं उसके अंदर, लाइक मतलब क्या ही चाहिए हुँ। तुमको, और भाई रख लो, मतलब दिस इज़ लाइक ये ले लो। इट वाज़ दैट क्यूट सॉन्ग। नाउ आई रियलाइज़ इट, पहले तो आई वाज़ स्कैर्ड ओनली, बट आई वाज़ लाइक ठीक है, आई हैव नाउ डन इट, आई हैव रिकॉर्डेड इट, आई विल जस्ट पोस्ट इट। एंड दैट सॉन्ग वाज़ इवन हुँ, प्रोड्यूस्ड बाय मी इनिशियली, वो सब गैरेज बैंड पे कुछ ना कुछ ट्राई व्राई करके एकदम नॉर्मी किया, कुछ भी किया है गैरेज मैंने बैंड। उसपे, या। And I had no other instrument except my voice, and I did not know how to, add other instruments in GarageBand itself. Production noob, ठीक हुँ। है। So I recorded my own self and उसका एकदम वो चेंज करा मैंने कि अच्छा ठीक है, अभी बेसी साउंड कराना है तो कैसे लोअर रजिस्टर पे गाती हूँ, and all हुँ, of that. I did all of that, हुँ। and that's how the song was made. And the other version that is there in my album is the stripped down version of it. I really like it. It's very cute. फॉर द ओरिजिनल वर्ज़न यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मतलब यूट्यूब चैनल इसका वो है कि जो अभी फाइनल प्रोडक्ट है उनका बीटीएस या फिर पुराने फॉर्म्स देखने हैं, यूट्यूब चैनल पे जाओ। बिफोर आफ्टर है ये फुल, मतलब आफ्टर इज स्पॉटिफाई, बिफोर इज हाँ, यूट्यूब, जाके देख लो। यूट्यूब। अगर मतलब उस पे भी कुछ ऐसे मस्त-मस्त वीडियो अगर इसने प्राइवेट ना की हो, मतलब नॉट प्राइवेट एनीथिंग, सब कुछ है वहाँ पे। खुली किताब। हाँ, देखो देखो भाई, सब कंटेंट देखो, मौजे मारो। सो नेक्स्ट सॉन्ग। हम्म, पूरी एल्बम कवर करनी है ना मतलब हमें आज। आई मीन यू वांटेड टू टॉक अबाउट एल्बम। हाँ, आई थिंक आई विल कवर वो, वी यूज्ड टू कॉल इट ई वाला गाना। कैन यू गेस व्हिच सॉन्ग इट इज? अरे समझ गया। या, इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। फक, इसका नाम क्या है? और मैंने ड्राइव पे भी ई वाला गाना करके सेव किया हुआ है उसको, एवरीवेयर इट्स सेव लाइक ई वाला गाना, बिकॉज़ इट्स ऑन ई स्केल, ठीक है? वेरी नाइस। हम्म, उद्भव का फेवरेट गाना वही बोल नहीं, दिया उसका ना? फेवरेट गाना इज़ एलबीडी। अच्छा ई वाले ये नहीं है? नहीं, नहीं, ही वांटेड मी टू रिलीज़ ई वाला बहुत पहले, बट मैं स्किप कर रही थी, पोस्टपोन कर रही थी। हाँ, एक कैसी ये सेकंड। पहेली, हुँ, दैट्स द सॉन्ग। हाँ, आई वाज़ सिंगिंग इन माय हेड, ठीक है? अभी ये फक फक वो कोरस तक लेके आना है मुझे, ताकि आई रियलाइज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द सॉन्ग। पहेली, पहेली। पहेली की तो स्टोरी आई थिंक यू नो। पहेली वाज़ रिटन मिडनाइट। बट व्यूअर्स डोंट नो हाँ, ना। व्यूअर्स डोंट नो। पहेली वाज़ रिटन मिडनाइट, मिडनाइट भी नहीं, मतलब डॉन बोल सकते हैं, एंड आई वाज़, हम लोग के लिए वो मिडनाइट ही हाँ, होता था हाँ, उस टाइम पे। honestly that only. And it is written for somebody and it was inspired also. So I would say inspired हुँ, not by a song but by a person and a situation that I was going through. I was extremely sorry, not sorry, I was extremely mad. Let's go with that. So I was extremely हुँ। mad at somebody because, लेट्स गो विद मिक्स्ड सॉरी sorry एंड and मैड mad वाला also, मिक्स। and kind of like, what the fuck is wrong, dude? Like, what did I do? So I just wanted to make up, and I want to know the हुँ, reason I went. So let's start with the beginning. So I shared a really good bond with this friend of mine, and suddenly the person stopped talking to me, and I did not know why is it happening, and they did not even respond to me for a long period of time. And I was just mad ki theek hai, like all I have to offer and all I offered you was love and support and happiness and everything. So I don't know what went wrong, so please let me know. And I just felt like this is a paheli only, ki bhai, I only have to figure it out, and I'm not getting any answers or हुँ, any kind of hints from you. So yeah, and but it was like I really adored the person, so obviously the song is adorable, and it's not like he full metal version of Kaisi Ye Paheli, ठीक है? Sweet lullaby kind of song. And इज़ मेटल वर्ज़न आल्सो इन द वर्क्स? I think I should make a metal version of Kaisi Ye Paheli. It's like post पहेली after it's sorted ना, अभी पता चल गया real reason क्या है हुँ, कि ऐसी ये पहेली, I'll tell हुँ, you what it is. Oh, but yeah, so and then it
I think I went through this emotion continuously for 3 to 4 days, and after that, I was like, fuck it. Now I'll write a song because I need to pour my heart out. And then I wrote the song, and Hmm. then I felt better. And by the way, this person still doesn't know that the song is about this person, and I've never shared this song with them ever. If they've heard it, it's good for them, but yeah, so they don't know about it. So that's a paheli for them Now, now. भाई you might know who you are, but कुछ confirm नहीं है because मेरे लाइफ में ड्रामा बहुत है, सो क्या पता वो तुम हो, क्या पता वो I तुम mean नहीं हो. people can see that. अभी तक उनने सुना है तो they can see that कितना हाँ, ड्रामा अच्छी है तेरी बात है लाइफ यार, एक में. आर्टिस्ट की लाइफ में ड्रामा तो होना ही चाहिए, वरना कंटेंट कहाँ से जनरेट होगा. That is also true. So and वैसे what is the story about this background? This background, oh. Good question. Okay. This background is not a Zoom background or any background that you would actually ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको. Honestly, because it's handmade. So I've painted this wall back in 2000. I don't know what, 16 I think. Hmm. And हाँ मतलब I was just not happy with white wall and I wanted to do something crazy. Hmm. So I started painting ऐसा नीचे blue ये I think इधर दिखेगा. And my mom entered my room and she was like, क्या कर रही है? हमें white wash कराना पड़ेगा. I was like, मेरा कमरा है, give me a few days. She's like, okay. Then I started painting little bit. तो अभी incomplete था ना, everybody's like, oh my god, Rashim, वो nice लग रहा है कितना. मैंने कहा हाँ हो गया अभी. Hmm. Let it build. अभी like a work in progress, and then I finally completed it. Took me a lot of time और मैं एकदम लूप पे वो सुनती थी आफरीन आफरीन. Hmm. ठीक है. इतना लूप पे सुन लिया था कि मेरे को एंड का राहत फतेह अली खान का वो भी याद हो गया आलाप. था, जो फुल तान वान ही सिंग्स नो, इतना लूप पे Hmm. सुना था मैंने वो. Hmm. And yeah, it's just I didn't think about how to go about it. I just Did it. went for it. I was like, ठीक है, Just I did want to it. just हाँ. Even at the shop, I was like, भैया colors दिखाओ. So he just started. I was like, ये अच्छा है, 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 and then I went for it. I just had galaxy in my head कि हाँ, I want to make like a galaxy kind of a vibe, Hmm. but it's too bright for a galaxy for sure because it has white background. But yeah, it is what it is. I really like it. And अभी गैलेक्सी की जगह पियानो टाइल्स है, लाइक फॉल सीलिंग जो हाँ, कि fall ceiling as piano. जो कि अभी नहीं दिख रहा होगा किसी कैम में. हाँ, yeah, it's not visible, बट but वो इंस्टा पे पोस्टेड है, मैं वो पिक्स लगा दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी. हाँ, लगाओ एंड लगाओ. फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई, वो उनको इंस्टा चेक करना पड़ेगा जाके. ठीक है. काफी नीचे तक स्टॉक करना पड़ेगा. आई मीन डोंट अंडर Well, you're in for a treat if you're gonna stalk me on Instagram. Sure. Go ahead. You might find some unreleased songs also. Snippets. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो ये अभी वापस उस पे फ्लो पे आते हैं अपना, जो ज़्यादातर एपिसोड्स में होता है. Important questions, like most common question, what do you think is importance of music in cinema? Music and cinema. I think Indian cinema, if we talk about high importance. Hmm. If we talk very practically, ये सब तो ठीक है कि हाँ म्यूजिक से वाइब आती है, ब्ला ब्ला ब्ला. हाँ वो है, वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है. Hmm. बैकग्राउंड स्कोर चाहिए सबको और एकदम वो आना चाहिए फुल. मतलब अगर एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस में पीछे ला 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 Hmm. ला नहीं बजेगा तो आपको रोना नहीं आएगा. Hmm. वो इम्पोर्टेंट है. Hmm. ठीक है. Hmm. तो उसके अलावा भी इंडियन सिनेमा हैज़ लाइक उनका गाना होना ज़रूरी है हर मूवी में. Hmm. सिनेमा में गाना नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, तो वो क्या मूवी है? मतलब पीपल डोंट इवन वॉच Western movies because they generally do not have background music. A lot of movies do not have background score. And even a lot of TV shows do not have background score. Hmm. Western.
इंडियन में तो फुल धूम तनाना हो रहा होता है। उसके बिना कैसे पता चलेगा कि भाई अभी चाटा पड़ा है उसको जब तक धूम तनाना नहीं होएगा। मतलब हुँ, इट जस्ट बिल्ड्स अप, इट इज़ सो हुँ, इम्पोर्टेंट। एंड फॉर मी आई थिंक मेरी तो जनरली लाइफ में भी बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है। हुँ, मैं रो रही हूँ तो पीछे से सैड सॉन्ग चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो मैं यूट्यूब पे प्ले करती हूँ पहले सैड सॉन्ग एकदम एकदम लो वॉल्यूम पे, एंड देन आई क्राई। लाइक हाँ, ऐसा फुल वाइब मतलब ऐसा फुल महफ़िल जमनी चाहिए ना रोने वाली, तभी तो वाइब आएगी, ऐसे कैसे भाई? हुँ, और इफ आई एम हैप्पी सो फिर मैं ऐसा फुल गाने बजाऊँगी, जिन्ने मेरा दिल लुटिया ओ हो, उसके बिना वाइब कैसे आएगी? हुँ, मतलब फिर ऐसा पूरे घर में नाचो, घूमो, तभी वो बजते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, हुँ, उसके बिना कोई पॉइंट ही नहीं है। So the same way goes for cinema. I think it's extremely important for portraying the emotion. It is an experience. Cinema is an experience that they want to give to you. yep, It's like a 3 hour or probably more long experience, and people go for it and they cry, they laugh, they experience every kind of emotion that the director wants to portray or the actor wants to portray, and music is an essential part of it. हुँ, It's like giving you an orgasm, and you really want it. हुँ. So why not? So, coming on to the last segment, any recommendations, like any artist, songs, movies you Hmm. want to recommend? ऐसे इफ हाँ, जॉनर बाय जॉनर जाना है, वो भी जा सकता है, लाइक इंडी में ये और एस्टेब्लिश्ड में ये, रॉक में, पॉप में, जो भी है। वो वाओ, इट्स गोना बी व्हाट हार्ड। जब कोई ऑन द स्पॉट मुझे सोचने को बोलते हैं ना, मेरी ऐसे फट लेती है बहुत, ठीक है? But I have a lot of people, but at the same time, I do not have a lot of people. आई नो। I do not go by artist. हुँ, I go by song. If I like a song, it's great. मतलब ज़रूरी नहीं है मैं उस आर्टिस्ट के सारे गाने मुझे पसंद हुँ, होंगे, बट मतलब I go by songs. I do not go by even genre. I do not go by artist. हुँ। This is how I go about. हाँ, तो And सॉन्ग्स। even in terms of films and all. हाँ, हाँ। तो songs I do have a lot of songs and I like। एक तो सूफी तो बहुत ही है, मतलब मैं तो अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे देती हूँ, जाओ यार सुनो, सब ठीक है, सुनो, ठीक भेज है? दो। आई सेंड वैसे बहुत ऐसे बनाई है मैंने एकदम रातें जग के, ये अच्छा ऊपर ये नीचे एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल आई वुड डेफिनिटली वांट टू शेयर प्लेलिस्ट के इट। बारे में आई हैव तो प्लेलिस्ट फॉर डिफरेंट मूड्स एक्चुअली। आई वाज़ सेइंग, प्लेलिस्ट के बारे में तो डिस्कॉर्ड वाले जो जिनको पता है उनको पता है। उनको पता है प्लेलिस्ट वाली चीज़ों के बारे में। Yeah. Even I have like shared playlist with my friends, and we like keep on adding songs, and then I every time I open it, I discover new songs that is added by them. So it's like full discovery चल रही एकदम साइड हुँ, में, वो भी अच्छा है। But yeah, songs. हाँ, there is this song called जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। इट्स अ कवाली, बहुत पुरानी, बट इट्स अ हुँ, कवर बाय अ बैंड। ब्यूटीफुल कवर। देन इट वुड बी ई शार्प का क्या मैंने सोचा, हुँ, बहुत बहुत सुंदर गाना। एंड डोजा कैट, एवरी सॉन्ग आई वुड रिकमेंड। आई मीन शी इज अ गॉडेस। उसका सॉन्ग क्या, तुम वीडियो देखो, हुँ, एंड इफ योर जॉज डोंट ड्रॉप, आई डोंट नो तुम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो अर्थ के ऊपर, बट ओके। Hassan Rahim, yes, my very very new favorite. Not new, I think I've been listening to him for quite some time now, since Aise Kaise released. हुँ, So yeah, that guy knows how to kill it, हुँ, and I love watching him and listening to his songs. It's crazy how he amalgamates Urdu, Hindi, and English together in a song, and it's so smooth how he shifts from each language. You do not realize. I mean, we all can understand it, and still it's not hard for us to switch from one हुँ, language to the other one. So it's really nice to listen to him. These are some of people that I can think at the top of my head. Obviously, Tisi Dunya, the first song that I was really hooked to by Tisi Dunya was Ajana. हुँ, So definitely listen to that one. It's like 5 minute long song, but वो मेरे को समझ में भी नहीं आया उन्होंने क्यों लिखा था, बट आई कुड अंडरस्टैंड द फीलिंग, एंड आई इवन हैड अ वर्ड विद हिम regarding the same thing, and he said, this is the kind of emotion we wanted to portray, and then a little backstory about the same. So, and it also has three of them, like the whole Tisi Dunya was a part of that song, so it's also like you can see everyone doing something or the other in the song, so it's great. हुँ।
Love it. Movies. Movies. Oh God, I'm such a big chick flick fan. मैं हर रोमांटिक मूवी मैंने देखी होगी और मुझे नाम भी नहीं पता होगा उस मूवी का Hmm. क्योंकि मैं इतनी देख चुकी हूँ ना मतलब मैं क्या बताऊँ like it's my guilty pleasure I would say and I watch a lot of horror movies as well. Hmm. So movies what would I want to recommend? So I would एक तो है हाँ I would repeat myself जो मैं उद्भव वाले पॉडकास्ट एपिसोड में भी बोला था इसमें था कि you have to suggest something which you want people to see. It doesn't have to be good or something. It has to be yours. ओके अब तो भाई और प्रेशर आ गया मतलब यूनिक होने का प्रेशर डाल दिया मेरे ऊपर ये भी नहीं कि तुम नॉर्मी बन के निकल लो नो नो अभी नो नो नहीं नो यू हैव टू बी उल्टा था इसका नॉर्मी हो सकती है. नहीं नहीं आई डू हैव अ मूवी जो मुझे बहुत क्रेजी लगी थी मतलब क्रेजी नहीं इट वाज जस्ट एज लाइक हम्म, नाइस काफी इंटरेस्टिंग दैट वाज तुम्बर अरे इफ यू सीन इट हाँ so I would want people to watch एंड that probably. मतलब है Great का movie. पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह चैप्टर ब्रेकडाउन एंड ऑल ऑफ दैट. Nice. So that is a movie I would recommend. वरना अभी क्या सोचूं मेरे को let me think. और कौन सी मूवी है that I would really want people to see? I can't think. मैंने Netflix की वो old watched वाली सीरीज है जहाँ मैंने क्या देखा है मैंने और क्या देखा है मैंने Let me just scroll. आर यू वाचिंग एनी एनिमेस? Not lately. I have watched a few, but honestly, मेरे को बहुत लोग मारेंगे, but I'm not that much into anime. ठीक है. There is a movie, मेरे को उसका ना plot याद है, but मुझे movie का नाम याद नहीं है. It's not a Hindi movie, it's an English movie, हम्म. and it was crazy. Oh, you can also watch Don't Breathe. हम्म. I've heard about it. बहुत crazy movie है वो भी बहुत crazy movie है. Nice. So that's what I would recommend. एंड चिक फ्लिक में जाए तो एक बहुत ही सैपी है और टू नाइट स्टैंड जाओ देख लो ठीक है. मतलब मेरे को सोचना पड़ रहा है कौन सी मूवी है. हाँ मैंने बहुत देखी मैं बता रही हूँ ना बस आई वोंट गो फॉर द नोटबुक एंड ऑल ये बहुत नॉर्मी कुछ ज्यादा नॉर्मी हो अरे गया भाई. सो आई वुड गो फॉर हैव यू सीन लंच बॉक्स? हाँ हाँ हाँ. ठीक है. उसको नॉर्मी बोलती तो तेरे को सही में फिर पीछे पड़ते लोग. इट्स नाइस मूवी ठीक है ठीक है. तो अभी जाते जाते लेट्स हियर अ सॉन्ग. हाँ ओके ठीक है a thing that I'm apparently good at मेरे को वो पोर्ट्रे करने के अभी अच्छा I can also sing the version of this song जो initially लिखा गया था तो that also I can do if you want You can do anything. what do you want You can mix them up. You can do a medley. Anything would work. medley क्या ही होगा ठीक I है mean, you are an impromptu artist. That much I and the Discord people know. So, चलो I'll sing a really mellow version of Pasa because other version is available everywhere so like let's give something different this time and this is how I originally wrote it and then we changed it a bit and added a lot of instruments and all so this is how it was supposed to sound initially तू जो कहे पास आऊं मैं आऊं तेरी उल्फत में मैं समाऊं कब से मैं यूं घूमूं बेकरार झूमूं मैं जैसे कोई खुमार कब से था मुझे तेरा इंतजार कब से हाँ हुआ तेरा नशा अब आगे का ना हो कोई पता हाँ हुआ तेरा नशा
अब आगे का ना हो कोई पता। ओ, मेरा दिल ये बेईमान न माने मेरी बात, कैसे मैं रोकूं इसको जाने जा। तू जो कहे पास आ मैं आऊं। तेरी उल्फत में मैं समाऊं। हुआ तेरा नशा अब आगे का ना हो कोई पता। हुआ तेरा नशा अब आगे का ना हो कोई पता। There you go. And thanks for singing. With that, हम लोग चलते हैं, विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको रशियन के सॉन्ग्स, उसकी आवाज़ पसंद आई तो स्पॉटिफाई लिंक वोट कीजिए इस नंबर पे। इट साउंड्स लाइक मैं इंडियन आइडल में वोट मांग रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज और अब मैं अच्छी लगी हूँ तो कृपया वोट कीजिए इस नंबर पे। ठीक है, उसी वाले टोन में अपना प्लगइन तू ही कर दे एंड वाला। सेम स्टाइल। भारत की जनता, अगर आपको मेरी आवाज़ और मैं पसंद आई हूँ तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे वोट कीजिए इसी नंबर पे, इसी लिंक पे जो नीचे ऐसा अटैच्ड है उस पे जाइए, मेरे हर सॉन्ग स्ट्रीम कीजिए, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप ये भी बोल सकते हैं कि रशिम आप तो बहुत ही ऑसम है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि थैंक यू, यू टू। सो प्लीज़। आई गेस मतलब ठीक है, ये मेरे से बहुत बेटर था, तो वी विल कीप दैट। एंड इफ यू वांट टू लिसन टू आर्टिस्ट लाइक हर तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसमें एक मेडले गाएगी ऐसे ही कोई भी यूट्यूब वाला? क्या गाऊं भाई यार, चल गाते कुछ। कुछ भी चलेगा, अपना बैक टू डिस्कॉर्ड वाला। पता नहीं, मेरे दिमाग में एक गाना है तो मैं गा रही हूँ, ठीक है। या जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं। हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं, ये दिल जरा सोच कर प्यार कर, ओ प्यार कर। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर, ओ प्यार कर। आई है चांदनी मुझसे कहने लगी, आई है चांदनी मुझसे कहने लगी, मेरे गली मेरे घर प्यार कर, ओ प्यार कर। And if you like it then subscribe कर, ओ like कर, share कर, ओ comment कर।